Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 13, Sun, Light and Shadow. Here is some warm-up questions. Match these animals to their shadows. So you can do it by yourself. Let's know about the sun, light and shadow, size of shadows and direction of shadows. Okay, so these are the topics we will discuss in this chapter. Here is the sun. The sun is a very big ball of fire. It shines brightly in the sky. It gives us light and heat during the day. It is made up of many gases. तो बच्चा जो सन है वो एक बहुत बड़ी सी फायर की बॉल है. वो हमें आपके जो स्काई है वहां पे ब्राइटली क्या करती है, शाइन करती है, हमें लाइट देती है, हीट देती है बच्चा ड्यूरिंग द डे. और ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है. Sunlight is necessary to keep us alive. Green plants make their food in the presence of sunlight. We get most of our food from plants. The heat of the sun evaporates water and helps to dry wet clothes. It also helps to ripen the fruits. The sun is very big, but it appears small. This is because it is very far from our earth. If there was no sun, the earth would have been a very cold and dark place. There would have been no life on the earth at all. So students, क्या है बच्चा, जो आपका सन है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. जो प्लांट्स को सनलाइट से एनर्जी मिलती है उससे वो अपना खाना बनाते हैं. और सन के बिना अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. अगर सन नहीं होता तो अर्थ एक बहुत ठंडा और बहुत डार्क प्लेस होता बच्चों. ठीक है, सो सन क्या है, हम सन है तो अर्थ पे जो है लाइफ है. ओके बच्चा, डू यू नो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो जो आपका सन है वो राइज कहाँ होता है बच्चा, ईस्ट में, और कहाँ पे सेट्स होता है, वेस्ट में. ओके, हियर इज वी हैव चेक एंड वेट. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. हियर इज light and shadow. Keep a ball on the table in a dark room. And now light the torch on the ball from one side. What do you see? Look at this picture, students. First you have to take a ball, put it on the table and you have to go in the dark room. Then you will light the torch. We see that light cannot pass through the ball. This is because the ball is opaque. As a result, a shadow is formed on the ball. That means बच्चा, जब आप टॉर्च ऑन करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट है वो आपकी बॉल से पास नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉल जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओपेक ऑब्जेक्ट मींस जिससे लाइट पास नहीं होती है. और उससे क्या होगा बच्चे, एक शैडो फॉर्म होगी. कहाँ बच्चे, आपकी वॉल पर. ओके, hence we can say that a shadow is formed when light cannot pass through an object. तो बच्चा हम बोल सकते हैं कि शैडो कब फॉर्म होती है, जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती है. लुक हियर, हियर सम पिक्चर्स, शैडोज. लुक एट दिस पिक्चर, द शैडो ऑफ योर हैंड एंड द शैडो ऑफ अ पर्सन. अ शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज लाइट. इट इज नेवर सीन इन द डार्क. सो आपकी शैडो फॉर्म कब होती है बच्चा, जब वहां लाइट होती है, डार्क में कोई शैडो नहीं होती है. अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. तो आपकी जो शेडो है वो आपकी लाइट की अपोजिट साइड फॉर्म होती है. ओके बच्चे, हियर इज द साइज ऑफ शेडो. अ शेडो इज ऑलवेज मूव्स विद द ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट्स साइज. तो आपकी जो शेडो है बच्चा वो ऑब्जेक्ट के साथ मूव करती है और अपना साइज चेंज करती रहती है. इट इज लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. सो आपकी जो शेडो है वो लॉन्गर होती है कब, मॉर्निंग और इवनिंग में. दिस इज बिकॉज द सन इज एट लोअर लेवल in the sky during these times. और ये क्यों होता है, क्योंकि जो सन है वो बच्चा लोअर लेवल पे होता है इस टाइम में स्काई में. ओके, here is a shadow is the shortest at noon because the sun is just above us in the sky. और जो आपकी शेडो है वो सबसे शॉर्टेस्ट कब होती है बच्चा, नून में. क्यों, क्योंकि जो आपका सन है वो आपके जस्ट आपके ऊपर होता है. ठीक है, thus the size of shadow also change with the time in a day. So, जो आपकी शेडो है उसका साइज कैसे चेंज होता है बच्चा, अकॉर्डिंग टू द टाइम इन अ डे. हियर इज सम पिक्चर्स. लुक एट द पिक्चर. शेडो इन द मॉर्निंग, शेडो इन द नून, शेडो इन द इवनिंग. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज वी हैव एन एक्टिविटी. ड्रॉ द शेडोज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स दैट वुड मेक ऑन द स्क्रीन. सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. हियर इज अ डायरेक्शन ऑफ अ शेडो. कीप अ बॉल ऑन अ टेबल, light a torch on the ball from the left side. Where do you see the shadow? Then light the torch on the ball from the right side. Where do you see the shadow? So what you have to do, बच्चे अब हम डायरेक्शन ऑफ शेडो फाइंड कर रहे हैं. तो क्या करना है, आपने एक बॉल को टेबल पे रखना है और टॉर्च को
ऑन करना है, एक बार आपको लाइट फोल्ड करानी है लेफ्ट साइड से, एंड द नेक्स्ट टाइम you have to fold the light from right side. When we light a torch on the ball from left side, the shadow of the ball is formed on the right side. So that means it is just opposite of light. But when we light the torch from the right side, the shadow is formed on the left side. Hence we can say that the shadows are formed in the direction opposite to the source of light. So that means जो आपकी shadow form होती है बच्चा, वो opposite direction में form होती है किससे? Source of light से. Okay, here is we have check and mate. Fill in the blanks with correct words. As you already read about these things, so you can do it by yourself. What we learn in this chapter, we discuss it in a nutshell. Here is the sun is a big ball of fire. तो sun क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल है किसकी बच्चा? फायर की. The sun is made up of many gases. sun बहुत सारी gases से मिलकर बना है. The heat of the sun evaporates water and help to dry wet clothes. और जो सन की हीट है वो वाटर को इवेपोरेट करती है और कपड़ों को सूखने में हेल्प करती है. लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, और लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं करती है. अ शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज लाइट. शैडो कब फॉर्म होती है बच्चा? जब वहां लाइट हो. अ शैडो इज ऑलवेज मूव्स विद द ऑब्जेक्ट एंड चेंजेस साइज. द साइज ऑफ अ शैडो आल्सो चेंज विद टाइम इन अ डे. हियर इज कीवर्ड्स. ओपेक, an object which does not allow light to pass through it. और opaque objects क्या होती है बच्चा? जो खुद से लाइट को पास नहीं कराते. Thank you students. I hope you are enjoying in this session.